Hi everyone, good evening. Hi Mansi. Hi Simran. Hi Kushi. Hi Deepshika. कैसे हो? How are you all? Good, I'm great. I'm also great. Mm, Good evening Tamanna. थके oops. Same. थके हुए हैं सब. Hi Suvidya. Hi Anjali. Hi Vishaka. Hi Pinky. Let's wait for another 2 minutes and then we'll start. क्वेस्ट सेकंड क्वेस्ट कंप्लीट कर ली थी गाइस. कल का जो शेड्यूल था, डिड यू फॉलो इट? ग्रेट तमन्ना, ग्रेट. डन अंजलि, ग्रेट ग्रेट. बढ़िया. वीजे आ गई है, वीजे इन द चैट. ग्रेट कशिश. सुविद्या क्या है यार? क्या हो गया यार सुविद्या? ओके यस. ओके दैट वाज अ यस. आई थॉट यार पता नहीं क्या हुआ यार. नहीं हो पा रहा यार. हो जाएगा यार. ये ओपीआई है चैट में. ये सबका करा देंगे. चलो. ओके लेट्स स्टार्ट. बाकी एवरीबॉडी विल ज्वाइन. हम स्टार्ट करते हैं. दी लाइक अभी स्टार्ट में स्पीड नहीं बन पा रही फॉर कंप्लीटिंग ऑल द लैप्स टाइमली. विल ट्राई टू डू फास्ट बट अगर स्पीड स्लो है कोई बात नहीं. What matters is you just get done with your schedule. मतलब जो रोज की 4 लैब्स है बस वो कर लो. बाकी कोई बात नहीं यार. स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे करके. I hope my screen is visible. Can you guys see my screen? यही से कह रही है बाकी सब चलता है.
Can you guys see my screen? Yeah, yeah, great, great. So, according to yesterday's schedule, you were supposed to complete the last two labs of the second quest and the first two labs of this quest. This is the third quest. Set up and configure a cloud environment in Google Cloud. So ये टू लैब्स और पहले वाली क्वेस्ट की लास्ट की टू लैब्स आपकी हो जानी चाहिए थी. आई एम कंसिडरिंग यू डिड इट. बाकी नहीं किया है तो टाइम से कंप्लीट कर लो, वरना यू विल फेस इश्यूज इन रिसीविंग योर गुडीज. सो कंप्लीट इट ऑन टाइम. और आज हम ये बाकी की चार लैब्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से अगर आपने कल वाला कर लिया हो तो एक एक क्लाउड मॉनिटरिंग वाला ऑलरेडी यू विल सी दैट ये इस पर टिक मार्क आ रहा होगा बिकॉज हमने ये लास्ट क्वेस्ट में कवर कर ली थी. सो we won't be talking about this. I explained cloud monitoring in the last quest. हम ये multiple VPC networks and last की two labs discuss करेंगे. So yeah, let's start. I have already opened the multiple VPC networks over here. Let me just refresh it. Acha, I'm gonna close my video because again I have joined through my hotspot. So just to save data, I am closing my video. Yeah, let's go. So in this lab, we will create several VPC networks and VM instances and test connectivity across the networks. So हम दो custom networks बनाएंगे. एक का नाम होगा management net and the second one would be private net. And we will attach firewall rules with them and VM instances, as you can see in this diagram. Yeah, let's. No, अभी तो ना ही देखो, confuse हो जाओगे. The My network with its firewall rules and two VM instances. These two instances, VM instances and this network already बने हुए हैं इस Quick Labs project में. So let's go ahead. But yeah, first of all, VPC network होता क्या है? VPC network is nothing but a virtual version of हमारा physical network जो implement होता है on Google का production network using Andromeda. So that is it. हम फिजिकल नेटवर्क को वर्चुअली क्रिएट करेंगे. लेट्स सी हाउ इट इज डन. I'll start the lab. विजय कह रही है लाइक द वीडियो गाइस, कर देना लाइक. अभी they are provisioning lab resources. चलो, let's wait till we get our lab resources. अच्छा, one thing I forgot to tell you guys. I noticed that several several of you have still not started completing their first quest. So
देखो अपॉर्चुनिटी मिली है तो फ़ायदा उठा लो। क्योंकि देर आर मैनी किड्स, ये चांस सिर्फ 60,000 किड्स को मिला है ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड देर आर मैनी किड्स हु आर स्टिल अप्रोचिंग मी कि दीदी कैन यू प्लीज़ अरेंज समथिंग, हमारा कुछ ना कुछ करा के प्लीज़ अरेंज करवा दो, वी ऑल्सो वांट टू डू दिस। मतलब दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, एंड देन देर आर सम ऑफ यू जो हाइप सुन के आ तो गए, बट तुमने मतलब करना शुरू करा है नहीं काम। सो आई मीन व्हाई आर यू वेस्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी? अगर नहीं करना तो सीधा सीधा बोल दो, वी विल ट्राई टू ट्रांसफर योर क्रेडिट्स टू दोज किड्स। ठीक है, मतलब देर आर पीपल आउट देयर हु आर वेटिंग फॉर दिस चांस, एंड व्हेन यू हैव द चांस यू आर नॉट डूइंग दिस। आई नो जो अभी लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं उन वो तो कर ही रहे होंगे, जो नहीं कर रहे वो लाइव स्ट्रीम में भी क्यों आएंगे इनडायरेक्टली। But yeah, if you watch this video later on, please complete your quests on time, वरना होगा कुछ नहीं। as I mentioned, टाइम पे कंप्लीट नहीं करोगे तो स्वाग्स मिलने में इशू आएगा, हो सकता है ना भी मिले। तो yeah, let's go ahead. I'll open this in incognito window. Next, password, accept. ठीक है, लोड हो रहा है, it is loading. In the meantime, I'll just do this and do this. ठीक है, so first task is to create a custom mode VPC network with firewall rules. तो navigation menu में जाके we have to go to VPC networks. And then VPC network, wait, here it is, VPC network and then VPC networks. Okay, it is loading. Alright, as you can see, as mentioned earlier, यहाँ पे दो networks already बने हैं, default and this my network, and these are their subnets, uh, जो different regions में बने हुए हैं. So we will be creating two new networks now. तो उसके लिए we have to go to this create VPC network and then fill out the parameters using these values they've given over here. तो name of the network है ये management net. पे लोड हो रहा है.
I'll just activate the cloud shell till then. ठीक है. Name of the network भी आ गया. हम इसे बाद में देखेंगे. Subnet creation mode custom ये already हुआ है. Then name of the subnet management subnet -us. So this scroll down. Region US Central 1. US Central 1. IP address is this. Okay. Baki leave everything at default. Just click done, and then uh, if you click the equivalent command line ना, तो अभी तो we are using making this VPC network using Cloud Console, but ये command line आपको equivalent command line code दिखा देगा using the Gcloud command line toolkit, and you can run these two commands. और जो VPC network हमने ऐसे बनाया है Cloud Console पे VPC network जाके फिर VPC network से create new network, वो चीज़ आप इन दो कमांड लाइन से भी कर सकते थे. So yeah, we'll just cancel that and hit create. जो अब हमारा सेकंड नेटवर्क है वो हम कमांड लाइन पे बनाएंगे. Yeah, they have shown ये सारी चीजें. Let's see बना या नहीं. मैनेजमेंट नेट. मेरी स्क्रीन ब्लर आ रही है. Try setting the viewing mode to 720p. ठीक है. ये हमारा बन गया. Check my progress. बाकी विशाखा वी डिस्कस्ड कि सारे डाउट्स डिस्कॉर्ड पर होंगे. सो पोस्ट व्हाटएवर यू वांट टू डिस्कस ऑन डिस्कॉर्ड. अभी वी आर जस्ट गोना कंप्लीट द लैब. अब कमांड लाइन में हम दूसरी वाली क्या कहते हैं दूसरा नेटवर्क क्रिएट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जी क्लाउड ऑथ लिस्ट ऑथराइज दिस एंड देन जी क्लाउड config list project. ठीक है. तो this command will create the private network. Gcloud compute networks create private net और उसका subnet mode is custom. So run this. अब हमें इस नेटवर्क का सबनेट क्रिएट करना है एंड इट्स कॉल्ड प्राइवेट सबनेट यूएस. सो इसके लिए Gcloud compute networks subnets create प्राइवेट ये नेम ऑफ द सबनेट. उसका नेटवर्क कौन सा है इट्स प्राइवेट नेट और रीजन कौन सा है यूएस सेंट्रल 1 एंड वो आईपी की रेंज दे हैव गिवन. एज आई सेड हम क्लाउड कंसोल भी यूज कर सकते हैं और ये टर्मिनल क्लाउड शेल भी यूज कर सकते हैं द टर्मिनल. अब हम एक और सबनेट बना रहे हैं. ये ईयू सबनेट बन रहा है इसका. देखो नेम ऑफ द सबनेट रीजन नेटवर्क रेंज बाकी की सारी चीजें सेम फॉर द नेटवर्क. ये सबनेट का था ये. डन. लेट्स चेक आवर प्रोग्रेस रेट. To avail the list of
मतलब अवेलेबल वीपीसी नेटवर्क्स कौन से अवेलेबल वीपीसी नेटवर्क्स है. विल रन द कमांड जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क्स लिस्ट. सो लेट्स सी कौन कौन से अवेलेबल नेटवर्क्स हैं. एंड इफ यू नोटिस ये आउटपुट मैच तो कर रहा है. इफ यू नोटिस कि these are these only मैनेजमेंट नेट, माई नेटवर्क एंड द ऊपर एक और डिफॉल्ट था. दिस डिफॉल्ट ये वही लिस्ट बता रहा है. इफ यू रीड दिस ना, माई नेटवर्क, प्राइवेट नेट, मैनेजमेंट, डिफॉल्ट. लेट्स गो अहेड. अब अगर हमें सबनेट्स की लिस्ट चाहिए, अवेलेबल सबनेट्स, so we ran this command gcloud compute network subnet list and it will be sorted by the network. So again the same thing कि हमने एंड से देखते ना कि प्राइवेट सब जो हमारा प्राइवेट नेट था उसके हमने दो सबनेट्स बनाए थे, एक ये यूएस वाला और एक ये ईयू वाला. वैसे ही हमने वैसे यहाँ पे माई नेटवर्क कितने सारे दिखा रहा है, डिफॉल्ट के ऊपर और होंगे. बेसिकली this subnets of a particular network. So default के ये सारे networks subnets दिखा रहा है, इतने सारे. मैनेजमेंट नेट का ये एक ही दिखाएगा और माई नेटवर्क के लिए इतने सारे हैं. सो इफ यू स्क्रॉल एंड रीड दिस ना, ये वही है, राइट. लेट्स ठीक है, ये वही है. They're also saying the same thing. You can see the same networks and save subnets over here. ठीक है, अब हम फायरवॉल रूल्स अटैच करते हैं टू मैनेजमेंट नेट. क्रिएट फायरवॉल रूल्स टू अलाउ हमारा SSH, ICMP, RDP ingress traffic to access the VM instance. So we will go to firewall here, VPC network में firewall, create firewall rule and parameters and values are already given. So name होगा this management net allow ICMP, SSH, RDP. This network will be management net. Leave other things to default, तो यहाँ पे mention नहीं है. Targets all instances in the network, ठीक है. Source IP ranges, source filter for IP ranges and IP ranges these. Make sure you include this slash arrow, slash 0. And this is important. Protocols and ports में specified protocols and ports. Okay, specified protocols and ports. And then इसमें हमने करना है check the TCP and type 22, 3398, 3389. Then we have to check other protocols and type ICMP. Again, if you click this equivalent command line, तो ये same equivalent command line code दे देगा, which you run in the Cloud Shell. You can directly run it in the Cloud Shell और same firewall rules generate हो जाएंगे. But अभी हम मैनेजमेंट नेट के लिए क्लाउड कंसोल से करते हैं. नेक्स्ट वाले के लिए हम प्राइवेट नेट के लिए हम क्लाउड शेल से करेंगे. डन, ठीक है. प्राइवेट नेट के लिए हम क्लाउड शेल से करते हैं. सो इस फायरवॉल रूल का नाम होगा प्राइवेट नेट अलाउ ICMP, SSH, RDP. G-Cloud Compute firewall rules. Create, this is the name. Direction ingress, property this. Network हमने specify कर दिया प्राइवेट नेट. Action allow, rules वही ICMP, TCP में 22, 3389 जो हमने सब टाइप किया. रेंजेस ये
सेम उसका इक्विवेलेंट कोड एग्जैक्टली. So this should be the output. अभी I think it will take. Okay, wait. Yeah, same output आ रहा है. Let's uh, ठीक है. Uh, if we want to see the firewall rules, the list of all available firewall rules sorted by network, तो ये बता देगा which is the same as this. ये सारे नेटवर्क्स ना सेम वहाँ पे नीचे डिस्प्ले हुए होंगे. लेट मी रिफ्रेश दिस. ये लोड हो जाएगा. एज यू कैन सी यहाँ पे भी यही जो फायरवॉल रूल्स हैं ये क्लाउड कंसोल में आ रहे होंगे. आई थिंक क्लाउड कंसोल बंद हो गया. कोई बात नहीं. Now we have to create two VM instances. So uh, this instance in this subnet and this instance in this subnet. So yeah, compute engine पे जाएंगे. VM instances. ठीक है. Create an instance. Okay. Create option. Again ये values हैं. We have to fill these values. Okay. Name will be this. US Central 1 Iowa, US Central 1F, ठीक है. N1 series and N1 standard 4. Okay, no wait. They have said 1 vCPU, F1 micro. Uh, F1 micro. Okay, wait. Okay. We have to go down and click this networking disk and all. इसमें networking पे जाएंगे. Networking interfaces. So this we have to select management net. Network will be management net. सबनेट हमारा ये ऑलरेडी आया हुआ है. ठीक है. क्लिक डन. ठीक है. अगेन इक्विवेलेंट कमांड लाइन से वही इसका सेम इक्विवेलेंट कमांड लाइन वो आ जाएगा. Code for which you can run in the cloud shell. So I'm just gonna hit create and voila. अब हम इसका इक्विवेलेंट मतलब अब जो दूसरा वाला VM इंस्टेंस बनाना है वो हम क्लाउड शेल पे बनाएंगे. अच्छा, since I'm opening this again, I would have to run those first two commands again. Can someone type in the chat what those first two commands were? Acha, okay, I don't have to. It has been recovered from the existing session. Great. Okay, but still, while it is creating, कोई chat में डालेगा?
या कशिश फर्स्ट कमांड से लिखी है. ग्रेट कशिश. ग्रेट. ऑथ लिस्ट जी क्लाउड, ऑथ लिस्ट जी क्लाउड, कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट. ठीक है. सो अभी हमने क्या किया, सेम वर्चुअल मशीन इंस्टेंस जो हमने क्लाउड कंसोल पे बनाया था, वो अब हमने क्लाउड शेल पे कमांड लाइन पे हमने बनाया यूजिंग दिस कमांड. सो जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस क्रिएट द नेम ऑफ द वीएम, उसका जोन क्या है, यूएस सेंट्रल 1F, मशीन टाइप इज दिस, N1 स्टैंडर्ड 1, सबनेट इज दिस, and output as you can see this matches this. तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है. Again, to view the list of all VM instances sorted by their zone, you can run this command. जो आपको यही दिखाएगा. If I refresh this ना, अभी तो 3 आ रहे हैं. When you will refresh this, तो चौथा वाला जो अभी हमने क्लाउड शेल से बनाया वो भी आ जाएगा, and you'll see this list only. Right. Let's move ahead. I would have to refresh this. तो अब हम माइनेट यूएसवीएम में SSH लॉन्च करेंगे and we will test its connectivity, its external IP. तो उसके लिए we will run this command. हम देखेंगे कि ping है the of the external IP address of the VM instance. हम इसे देखेंगे to determine if we can reach the instances. हम इन instances को reach कर सकते हैं क्या publicly. तो ping check करने के लिए we will write this command for all the instances, and yeah, we will replace this with their external IP address. So ठीक, ये हमारे 4 वो है. Let me just copy this, paste this over here. First we have to check mynet EU का VM, mynet EU VM का external IP. So this one, copy this, remove this, remove हो गया. Paste here. ठीक है. We can see that it works perfectly fine. 3 packets transmitted, 3 packets received, 0 packets का lost हुआ, 0% loss हुआ. So same if you run this uh, management USVM, इसका रन करोगे तो भी ठीक आएगा. Let's run this. Let's quickly run these. I'll just press the up arrow key and change the IP, external IP, which will also run fine. हाँ देखो 0% लॉस हुआ है. और अब हम प्राइवेट नेट यूएसवीएम का चेक करेंगे लाइक दिस. सो इसका भी कॉपी कर लो एंड रन दिस लाइक दिस. ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक रन हो रहा है. अब अगर हम इनका इंटरनल आईपी चेक करें, अभी वी वर चेकिंग देयर एक्सटर्नल आईपी. Okay, we had to do this on the SSH terminal, and that's fine. SSH of mynet USVM. ठीक है, we can see this on the cloud too, but अभी SSH पे करके देख लेते हैं. mynet this one ना, USVM third. इसके SSH पे we have to run it. Nothing will be different. It will all be the same. Uh, this. Okay, yeah.
ये था ना, अब हमें इंटरनल आईपी चेक करनी है, तो wanna write this over here, स्पेस डालनी थी. दिस विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन अगेन, 0% पैकेट लॉस. अब अगर हम मैनेजमेंट नेट यूएसवीएम और प्राइवेट नेट यूएसवीएम पे चेक करेंगे तो उस पे 100% पैकेट लॉस आएगा. नेट यूएसवीएम, तब तक मैं प्राइवेट नेट यूएसवीएम का कॉपी कर लेती हूँ. जस्ट कॉपी दैट. या हियर इट इज. Yeah, see, 3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss. Let's run it. Oh, I think since I selected that it got copied, I will have to copy this again. See, this will also not work. Uh, why? Because they, ये जो है ना, they are in separate VPC networks from the source of the ping. So source दूसरे VPC network में है and these are in different VPC networks. So देखो, 100% पैकेट लॉस. इसलिए yeah, you won't be able to access this. So in the chat you guys need to type which instance or instances should be able to ping from the mynet usvm using the internal IP address. mynet usvm, इससे कौन से वाले पिंग हो पाएंगे. अभी हमारे प्राइवेट नेट और मैनेजमेंट नेट नहीं पिंग हो पाए थे. सो या अब कौन सा वाला पिंग हो पाएगा. These two could not ping. Okay, Kashish is saying mynet EUVM. Tamanna is saying management net USVM. तमन्ना, my question is कौन सा वाला पिंग हो पाएगा, because clearly we saw कि मैनेजमेंट वाला और प्राइवेट वाला तो हो ही नहीं पाया. हाँ, तो this will be mynet EUVM only, क्योंकि इसका VPC network is same ना. Let's go back. Let's go further ahead. We have to create the VM instance with multiple network interfaces. अब हम एक ऐसा VM instance create करेंगे जिसमें multiple ये VPCs add होंगे. So VPCs and their subnets. So okay, let's go back to Cloud Console and navigation menu, compute engine. अच्छा, ये तो हम यहीं पे थे. Leave it. I would have to create a new instance. Oh no, मैंने create a new schedule कर दिया. Sorry. Cancel this. Name of the instance will be this. US-1, US-1F. Create instance.
US Central 1, US Central 1F. Uh, what next? N1 and 4V CPU. Okay. Machine type is N1 and this is N1 standard 4, I guess. Huh. N1 standard 4. Great. Um, you have to click networking and networking disk security and all like this. Go to networking. Okay. Networking interfaces may we have to click at this drop down and select the network as select the private network and uska subnet is already been given. Leave everything else as default and click done. Then click add new network. Of the next network we'll add is this management net. Management net इसका भी subnet is already given. Leave everything else as it is. Done. uh, Add new network. Now we're gonna add this my network. इसका भी my network already by default is given. Just click done and then we're gonna click create. तो हमने एक VM इंस्टेंस पे मल्टीपल VPCs डाल दिए. Let's wait for it to finish loading. I think this is the last step of the lab. इसके बाद हम बस एक चीज़ चेक करेंगे and we're done with this lab. Yeah, great. Let's check our progress. Great. Okay, now we have to click at the NIC 0 internal IP में of the VM appliance. Like इसका we have to click this. ठीक है. We can clearly see that NIC 0 जो है, it is attached to this private network. If we click at this and select NIC 1, it is attached to the management network. NIC 2 is attached to the my network. ठीक है. और इन सबकी डिटेल्स वगैरह भी गिवन है. VM इंस्टेंस में हमने सारे नेटवर्क डाल दिए थे. So now we have to go to the VM appliance. Let's go back. हम इसका SSH लॉन्च करेंगे. So I close this SSH. Like this. We'll launch this SSH. ठीक है. We're gonna list the network interfaces in this VM instance. As I said, हमने 4 networks attach किए थे ना, 3 और 4. So वो सारे आ जाएंगे by running this command. Sudo ifconfig. Yeah. We are getting the same output and demonstrate that VM appliance instance is connected to these 3 by pinging VM instances. तो इन 3 networks के साथ ही connected है. If you want to cross check that तो हम ping करके देख लेते हैं.
इन तीनों का आईपी एड्रेस कॉपी करके इंडिविजुअली यू पेस्ट इट, सो यू रन दिस एंड शो यू एक करके एंड यू कैन रन दी अदर टू. सो पिंग -C3. हम पहले प्राइवेट नेट यूएसवीएम का रन करके देखते हैं. प्राइवेट नेट यूएसवीएम. ओके, सो इसका इंटरनल आप आईपी कॉपी करो एंड go here. I'll just close this. It's over. 0% पैकेट लॉस, ये बिल्कुल ठीक पिंग कर रहा है. सेम यू टेस्टेड फॉर द मैनेजमेंट यूएसपीएम. उसके आईपी को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है इस कमांड में, बस रिप्लेस दी आईपी. सेम माइनेट यूएसवीएम का करना, पिंग बिल्कुल ठीक होएगा. माइनेट यूवीएम में दिस विल नॉट वर्क. Why? Because every interface gets a route for the subnet that it is in. Um, unless manually configured, otherwise any traffic leaving an instance. I guess uh, I'm sorry for all the background noise if you guys can hear it. It's a single default role. ठीक है. Run the following command. If you want to list the routes for VM instance, we'll run this command. ये output आ जाएगा. You guys can clearly run it and see it. और इसके बाद हम lab end कर देते हैं. I am so sorry for all the background noise. Seems like some guests have arrived at my house. Uh, can you just wait for a second? I'll be back real quick. I'm so sorry. Going forward with the next lab. यार ये वर्क फ्रॉम होम है ना, ये सारा घर से बैठे बैठे सब कुछ करना पड़ता है. एंड घर पे देर आर सो मेनी डिस्टर्बेंसेस. रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. व्हेन you'll refresh this ना, so तुम्हारा ये वाला डन हुआ होगा. We discussed this in the previous live session, so this is already done. Moving forward with the last lab, learning lab kind of for this quest. इसके बाद हमारा challenge lab आ जाएगा. तो managing deployments using Kubernetes engine. I'm just gonna close this. I'm gonna close this. Right. We're gonna start with this. I see that we're short of time, so I'll explain this थोड़ा ऊपर से. You guys go ahead and read this on your own एक बार and make notes. Okay, so when you work in the DevOps field, all of you I bet must have heard that for CS jobs there's this SD job, software development engineer, quality assurance engineer होता है, तुम्हारा डेटा इंजीनियर होता है, डेटा साइंटिस्ट, वैसे एक डेवॉप्स भी होता है. सो डेवॉप्स ना, दे विल रेगुलरली यूज दीज डिप्लॉयमेंट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे आज, कुबरनेटीज की डिप्लॉयमेंट्स. आई सेंट अ वीडियो अर्लियर when we were discussing the first quest, so I sent an introduction to Docker and introduction to Kubernetes video. उसमें they talked about the deployments, so I'm not talking about what a deployment is. You can go back and check those videos out. But हाँ, हम यहाँ पे
how to manage these deployments. We will be talking about that. Specifically, the continuous deployment, blue green deployment, and canary deployment. So let's go ahead. एंड या यहाँ पे इन्होंने हेटेरोजेनियस डिप्लॉयमेंट्स की डेफिनेशन दे रखी है दैट इट टिपिकली इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग टू और मोर डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट्स या फिर रीजन्स, दो डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट्स या फिर दो डिस्टिंक्ट रीजन्स को कनेक्ट करना होता है टू एड्रेस एक स्पेसिफिक ऑपरेशनल नीड या फिर स्पेसिफिक टेक्निकल नीड. तो इसे हम हेटेरोजेनियस डिप्लॉयमेंट बोलते हैं. It is also called hybrid, multi-cloud, or private, public-private deployment, depending upon the specifics of the deployment. Uh, and yeah, why? What problems these heterogeneous deployments tackle? They tackle these problems. So maxed out resources, limited geographic reach, limited availability. ये सब you guys read on your own. We're gonna proceed with the lab. Uh, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर नहीं आता समझ तो टैग मी ऑन डिस्कॉर्ड या फिर टैग योर ग्रुप लीड ऑन डिस्कॉर्ड. दे विल एक्सप्लेन इट ऑल टू यू. Let's open this in incognito mode. Next, password, pasting this, accept. Just gonna do this in the meantime. Okay. Activating the cloud share. Yeah, we will do this. स्क्रीन लैग हो रही है. What do I do? Should I stop sharing and then share again? Are you all of you facing the same issue? सबके पास स्क्रीन लैग हो रही है क्या? ग्रेट, ठीक है. तो हमने ऑथराइज कर लिया द क्लाउड शेल. वी आर गोना सेट द जोन फर्स्ट. We already know this command from the previous sections, previous labs. Now we're gonna get the sample code for this lab. Sample code for creating and running containers and deployments. So we use the gsutil toolkit. Yeah, let's go. And now we're gonna create a cluster, a GKE cluster, with 5 these N1 standard 1 machine type nodes. And this will take a few minutes to complete. Okay. So वही gcloud containers cluster create, and these bootcamp num nodes 5 है हमारे पास, and the scope is this. Create. This will take a while. तब तक हम यहाँ पे आगे के कोड्स देखते हैं. Let's get started with the deployments. So
uh, having a look at the deployment object first. जो यहाँ पे explain command है in kubectl that can tell us about the deployment object. So kubectl explain deployment, and we can also see all of these fields using this tag recursive option dash dash recursive option. You can use the explain command as you go through the lab to understand the structure of a deployment object. Yeah, आगे जाके you can use the explain command and बाकी चीज़ें deployment objects के सारा structure आप देख सकते हो, and you can understand what the individual fields do. ठीक है. While this is running, they said that this will take a while. ये नहीं 720p पे सेट कर लो रेजोल्यूशन. Let's see. We will be opening a YAML file. YAML configuration file हम open करके deployment को edit करेंगे, update करेंगे. So using the VI text editor. So VI deployments slash this auth.yaml file, and I'll show this to you आगे. You can't edit this file until you press the I key. So I key दबा के you will be able to start editing this file, and then हमें बस यहाँ पे image change करनी है. So जो image है in the container section, हमें बस उसका ना यहाँ पे I guess वहाँ पे 2.00 होगा, हमें इसे 1.00 करना है. या फिर एस्केप दबा के फाइल सेव होगी और हम एग्जिट करेंगे यूजिंग दिस कमांड. अभी लेट्स वेट फॉर दिस टू कंप्लीट. जो guys, you tell me, do you want me to uh, complete to complete the next challenge lab on this live session, or do you want me to send the code? Because आई थॉट दैट इन दो लैब्स को करने में ही टाइम लग जाएगा ज़्यादा. सो इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल एंड फ्री, सो वी कैन complete the challenge lab on the live too, or else I'll share the code file with you guys. Let me know in the chat. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा वो डिप्लॉयमेंट के बारे में, एज आई सेड अर्लियर. And these commands will also explain बाद में the same thing using the recursive tag. You can read all of this. So explain command you can run later. Abhi let's create the deployment. So I'm gonna run this vi deployment slash auth yaml. देखो ये YAML file open हो गई है, and if I'm pressing anything, अच्छा I pressed I already. Okay, if you don't press I ना, तो what did I do? Okay, what did I change? Let me just exit. अरे यार मैंने क्या चेंज कर दिया? Okay, I hope I didn't change anything. We have to change इसका image. So here's the image, and as I said, यहाँ पे ये 2 था, we had to write 1. Okay, we're gonna hit escape. Then type WQ WQ. We're out of that command line.
So let's run this. cat से आउटपुट आ जाता है. दैट वाज एपीआई वर्जन. ओके, मैंने उसे सिर्फ वर्जन कर दिया. लेट्स गो बैक एंड एडिट इट. आगे जाके वी माइट फेस सम इश्यूज. दिस वाज एपीआई. ओके ओके वेट. एपीआई escape, save, and then colons and wq. Running the cat command again. आई थिंक वो ठीक है अब. या एपीआई वर्जन आ गया. ठीक है. एंड इमेज में हमने ये वो जो वर्जन चेंज किया था दैट इज ऑल्सो clearly visible. We can see that ये जो deployment है, it is creating only one replica and using this version of the container. So when you run the kubectl create command, it will make only one pod that uh, conforms to the data in deployment manifest. इसका मतलब है we can scale the number of pods by changing the number specified in the replicas field. रेप्लिकास फील्ड में तुम जो भी नंबर चेंज करोगे उतने नंबर ऑफ पॉड्स बन जाएंगे और उतनी तुम्हारी स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो we're gonna create our deployment using this command kubectl create -f deployments /auth.yaml. Yeah, we can verify that it was created by using this command kubectl get deployments. ठीक है. And we can get the replica sets for the deployment, verify that a replica set was created. Yes, बना था. Finally, we can view the pods that were created. हमारे कौन से कितने pods बने थे and are they running or not? They're running. Okay, one pod was created. ठीक है. It's time to create a service for our auth deployment. Service create करने के लिए we run this command kubectl create -f services auth yaml. Okay, didn't get copied. We have to have. अब हम सेम कमांड
Hi guys, can you see me now? I got disconnected. So sorry, I faced yet another network issue and I might get disconnected again. Just a second. Can you guys see me and can you guys hear me? Yeah, okay. I'll start sharing the screen again.
Uh, so sorry again. आज भी नेटवर्क हो रहे हैं. I hope you guys can see my screen. Where were we? Where were we? Yeah, I think we ran that command. And we have to run this command. kubectl created services. Yeah, we ran this command, okay. Uh, create. Let me refresh this tab. ठीक है, हमने YAML फाइल ओपन करी थी और एडिट करी थी. वी आर क्रिएटिंग आवर ओन डिप्लॉयमेंट. तो अभी हमने auth डॉट क्रिएट करा था, auth डॉट YAML एडिट किया था, एंड देन अभी हमने hello डॉट YAML क्रिएट करा है हमारी ये डिप्लॉयमेंट फाइल. बस अब एक डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट और एक्सपोज करनी बाकी है. उसके लिए वी विल रन दिस कमांड. So I'm gonna copy this and yeah. ठीक है. Great. Now we have to interact the front end by grabbing its external IP. तो अभी हम इसकी एक्सटर्नल आईपी आई नहीं है. लेट्स वेट फॉर अनदर 2 to 3 seconds. एक्सटर्नल आईपी आ जाएगी. देन विल रन दिस कर्ल कमांड और यहाँ पे हम एक्सटर्नल आईपी डाल देंगे उसकी जगह, और हमें रिस्पॉन्स में हेलो आना चाहिए. सो लेट्स सी. अभी भी इट इज पेंडिंग. We're gonna copy this and we're gonna run the command curl -ks https / this messages hello. So okay, deployment successfully created and it is interacting. So you can also use the output templating feature of kubectl to use curl as a one liner. आप ये फीचर भी यूज कर सकते हो. यूज कर्ल एज अ वन लाइनर. इससे भी मैसेज हेलो ही आएगा. या checking the progress. We're halfway through, I believe. Now we have to scale the deployment. So deployment को we will scale by updating this field spec.replicas field, and इसके लिए we will run this kubectl. हाँ, to explain this command again कि ये command करती क्या है. We run this command. I am not running this right now. You can read the explanation later. So replicas field, they can be easily updated using the scale kubectl scale command. So kubectl scale deployment, which deployment do we have to scale? This hello one, और इसके replicas create 5. So hello scaled, okay. Now we have to verify that there are 5 pods running. हमने 5 replicas create कर लिए ना. So we run this command. Yeah. Now we're gonna scale the application again. Scale back the application. यहाँ पे 5 आ गया था. 5 pods. Hello scaled. Okay. Now we have to verify again the number of pods. Let's see.
3 हमने यहाँ पे रेप्लिकास 3 स्पेसिफाई कर दिया, तो ना अब हमारी 3 रेप्लिकास और 3 पॉड्स है। ओके, रोलिंग अपडेट। तो deployments, they support updating messages to a new version. You can update the images, sorry, to a new version through the rolling update mechanism. तो जब भी कोई एक डिप्लॉयमेंट अपडेट होता है विद द न्यू वर्जन, तो वो क्रिएट करता है एक न्यू रेप्लिका सेट, and so slowly it increases the number of replicas in the new set as it decreases the replicas in the old set. ठीक है, तो अब हम एक रोलिंग अपडेट क्रिएट करके देख लेते हैं। टू अपडेट द डिप्लॉयमेंट वी आर गोना रन दिस कमांड। आई होप आई एम my screen is visible because that I'm not able to check। मेरा ना फ़ोन बंद हो गया एक्चुअली, तो उसकी बैटरी डेड हो गई एंड आई वाज कनेक्टेड ऑन द हॉटस्पॉट। सो अब मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। इफ़ आई यूज़ इट तो वो फिर से बंद हो जाएगा। But yeah, you guys let me know। I think my screen share हो रही है, so my screen is being shared। I'll proceed to update the deployment। I think we updated it। We will update it। I'm so sorry। अभी हमने इसे edit करने के लिए open करा है, and now what we have to do is change this version again। So if you guys remember, हमने इसे अच्छा नहीं, that was different, I believe that was the auth.yaml file। this is the hello.yaml file, and if I'm wrong you can correct me in the chat, but I believe that was auth.yaml। यहाँ पे we have, अच्छा सी आई एम क्लिक, मैं टू दबा रही हूँ बट एडिट नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू ना, यू हैव टू प्रेस द आई की फर्स्ट to be able to edit this YAML file। So I pressed I and now I can edit it। Okay, save it by pressing escape, then exit by running this :wq command। Okay, we can see the new replica set जो Kubernetes ने create करा है by running this command kubectl get replica set। Great, and we can check also its rollout history। Great, now if we want to pause the rolling update, so we run this command। If you detect problems with the running rollout, you can pause it to stop the update। So we tried it and you can see that it says hello paused। ठीक है, we're gonna verify the state of the rollout। ठीक है, सक्सेसफुली रोल्ड आउट। ग्रेट, और हम इसके पॉड्स भी डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, तो वी पॉज्ड इट नाउ। तो अब if you want to resume it, so we run these commands: resume deployment slash the name of the deployment, in our case it's hello। हम इसका फिर से रोल आउट स्टेटस चेक करते हैं। सक्सेसफुली रोल्ड आउट अगेन। this is the output। we're supposed to run this, and if you want to update the rollback, so assuming that a bug was detected in your new version, so since the new version is presumed to have problems, bug है तो problems है, any users connected to the new pods they will experience those issues। so if you want to update it or fix it, you can run these commands: so kubectl rollout, undo deployment, hello, again view the rollout history, finally verify the pods have rolled out। अब lastly we've arrived at the Canary deployment। I think इसके बाद deployment है। Let me check over here।
Yeah, Canary deployment. You can read the blue green deployment section on your own. अभी तक समझ आया, आगे का भी आ जाएगा because we are running very on time. It's almost 8:30 now. So a canary deployment, it consists of a separate deployment with your new version and a service that targets normal and stable deployment. तो एक सेपरेट डिप्लॉयमेंट जिसका न्यू वर्जन है एंड सर्विस दैट टारगेट्स both normal and stable deployment as well as your canary deployment. So these all things come under a canary deployment. And to create a canary deployment, we're going to run this command. We're going to call that deployment canary. So opening the YAML file, output ऐसा आएगा. We can already see that. Now creating, sorry, this is the create command. Dash f deployment slash canary deployment. ठीक है. अब हमारे पास दो डिप्लॉयमेंट्स है, एक हेलो कैनरी. So we're gonna verify this uh, using the get deployments command. हेलो कैनरी हमने ऊपर auth और फ्रंट एंड भी बनाए थे. Yeah. You can verify the hello version being saved by the request. So you're gonna run this command. Run this several times and you should see that some of the requests are served by hello this version and a small subset are divided by this version. So let's see this. अभी हमारा 1.00 आया है और as some say 1.00. We're gonna continuously run that command. See, you can see एक ये 2.00 versions है, वो 1.00 versions है. So let's check our progress. Great. And yeah, give this all a read on your own once. And uh, I would suggest follow these commands too. Abhi, for the tracking of the progress, from the tracking of the progress point of view, we can end the lab. But I would suggest एक बार read about the blue green deployment also, and check out these rollbacks command and all the other commands. So yeah, let's end this lab. And finally we're back over here. हमारा एक लास्ट चैलेंज लैब बचेगा. So let's complete this as soon as we can. I would highly suggest you guys to go back and revise all of these labs. एक बार revise these concepts and then attempt the challenge lab. And if you get stuck, your group leads and facilitator, that's me, we're here to solve your doubts on Discord. But if you guys want, we can solve this lab right now. It's 8:30. I hope you guys don't mind staying up a little late. We'll try to finish this as soon as possible, but um, you let me know. Whoever is here, I'll share the lab codes. If you're not able to do this, I'll share the lab codes. Is anyone still here? I would have to get my phone to see the YouTube charts.
Okay, I can see. I can see some yeses. Great. Let's get done with this lab then, fatafat. Because since this was in our schedule now, so let's just get done with this as soon as possible. वरना you guys only will call me a hypocrite. दीदी आपने schedule कर रहे हो. Just bear with me with for another 15 to 20 minutes. It should take maximum. Uh, there are 9 tasks over here, and just so that we can complete this as soon as possible, as quickly as possible, I have this uh, doc file ready with me. So yeah, but guys, do complete, do revise all of these concepts before attending the challenge lab first. Okay, cleaning up this here. Lab resources are still being provisioned. Okay. In the meantime, I'll just close this. Like this. New incognito mode. Let me copy this. Start with the first username. The second username you'll need in the very end. Very end, last task may you will need the second username. So make sure you're starting with the first username. I'll just split my screen again. I'll split it like this. Okay. The challenge scenario that you're working again as a junior cloud engineer for cloud engineer for Julian Corporation, and now you're a cloud engineer. Earlier you were a trained with the Google Cloud and Kubernetes, and you have been asked to help a new team. So the name of the team is Griffin. You have to set up their environment. So you need to complete these 10 tasks, and there are some standards you need to follow. Uh, you have to always mention the region as US East 1 and zone as US East 1B unless otherwise specified. You have to use the project VPCs. Okay, नेमिंग कन्वेंशन हमारा टीम डैश रिसोर्स है. एग्जाम्पल अगर टीम का नेम क्रैकन है तो रिसोर्स का नेम वेब सर्वर है. अभी हमारा टीम का नेम ग्रिफिन है. सो कीप दैट इन माइंड. And since the machines are costly, we have to standard dash one machine types. Okay, sorry. Great. Let's continue. Okay, we have to set up there. It should be like this. एक WordPress environment create करना है हमने. Our first task is to create a VPC manually. So ये इन्होंने दिया हुआ है कि VPC नेम ये होना चाहिए एंड देन देयर क्या कहते हैं सबनेट का नेम, IP एड्रेस नेम. सो you can just
go over here. Okay, VPC network, VPC networks. Create a VPC network. Okay, the name of the network is this. Great. Leave everything else as default. Name of the subnet is this. We have to create two subnets. So this is the subnet. Region, as we mentioned earlier, it should be US East 1. IP range is given. Okay, done. And then we have to add another subnet. This is it. The subnet region again US East 1. IP is this. Done and hit create. Through this, your task 1 is complete. I have the equivalent command line for the for creating this on Cloud Shell, so you can run that. You can run it yourself too. Go back to that multiple VPC networks. See the equivalent command line code, or you could have just clicked the equivalent command line code at the bottom. Okay, let's activate the command Cloud Shell till then. Okay, we are done with this. We have to create another VPC network. The name of the network is this. Again, two subnets. So name of the first subnet is this. Region again US East 1. IP address is this. IP range. Click done. Click add subnet. Name of the next subnet is this. Region US East 1. IP range is given. Okay. Click done. Click create. In the meantime, let's authorize the Cloud Shell. This gcloud config list project. ठीक है. Moving on to the third task. हमारे दो task हो गए. We have to create a bastion host. So bastion host with two network interfaces. One will be connected to Griffin Dev MGMT. This is one of the subnets that we created. नहीं, हाँ, MGMT and दूसरा वाला will be connected to Griffin Prod MGMT. Okay. And we have to make sure you can SSH to the host. ठीक है. That was successfully created. Let's check our progress. Okay. तो फिर bastion host डालने के लिए I have right here.
I'm just gonna copy them from here. We've completed the first two tasks. So yeah, I'm just gonna copy all of these. Uh, wait, एक issue आ गया हमारा. I accidentally included the one here. I would have to move this one. Wait, let's check the progress. Great, done. Fourth task में we have to create and configure a cloud SQL instance. So SQL uh, was in one of the labs that were you were supposed to cover yesterday on your own. So I hope you covered that part. And let's move on to this. We have to create a MySQL Cloud SQL instance, and it will be called Dev Griffin Dev DB. Zone हो गया. Region is US East 1. ठीक है. Connect to the instance and run the following SQL command on WordPress environment. ठीक है. We have to run this command. Let's go over here. We have to run. पहले तो हमें SQL instance create करना है. This will take 5 to 7 minutes. If you guys know, only this command will take 5 to 7 minutes. बाकी हो जाएगा. ठीक है. देन हम कनेक्ट करेंगे SQL टू दिस Griffin Dev DB, the instance that we created, SQL instance. हम SQL इसके साथ कनेक्ट करेंगे एंड देन we have to type in the password और run the code as they said. ठीक है. Cool, no worries. Only this will take a while. Uh, it's still. यार.
विशाखा रोड दी। मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ जो अभी रिसेंट बने हैं, बिकॉज आई हैव रजिस्टर्ड अमंग द 10K slot and chose a different institution because of hurry, but I am from Kalindi college, so आप एक group हमारा भी बना दो the need for us. You can join any group you like, Vishakha. Uh, join any group you like. Uh, any head will be happy to help you. You can get your doubts clarified from any head. ठीक है यार. uh, I think this should be done in another minute or two. It has already taken so much time. Hmm. I hope our lab doesn't. Okay, we have time. हो जाए यार, कब होगा? We need to move on to the next task. कितना टाइम ले रहा है यार? Okay, great. हो गया. Great. Now let's connect the SQL to this instance. ठीक है. This will complete in less than a minute, I guess. Again, sorry guys, it got so late, but we have to be on. We have to follow our schedule, वरना टाइम पर क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएंगी. Okay, amazing. I could have faced another network issue right now, but कहते हैं ना, लगता है भगवान ने भी तरस खा लिया मेरे ऊपर, इतने नेटवर्क इश्यूज मेरे साथ हो रहे हैं. लाइट चली गई घर की यार. तो अगर मेरा वाईफाई चल रहा होता तो अभी तक वो भी उड़ जाता और मेरे को फिर हॉटस्पॉट जाना पड़ता, बट लकीली आई एम कनेक्टेड थ्रू हॉटस्पॉट ओनली. सो ग्रेट. ठीक है. व्हाट डिड वी डू हियर? यहाँ पे उसने पासवर्ड मांगा एंड हमने ना पासवर्ड टाइप कर दिया. वी रोट पासवर्ड ओनली ओवर हियर. वेयर इज इट? हियर. We wrote password. You can't see it, but you have to type it. For those of you who completed the SQL lab, you must have faced this situation. You just write password and hit enter. वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा. You can't see the password. Then we copied this code, we pasted it over here, exit कर दिया हमने
and voila, task completed. Next task may we have to create a Kubernetes cluster. It should be a two-node cluster, though N1 standard for CPUs होने चाहिए. It should be called this in this subnet and in this zone. So let's create that cluster. I'm gonna start from here. I'm gonna copy this. Paste here. It's working on the cluster in the meantime. I'll just copy this. Okay, we have to create a cluster. We have to prepare the cluster. We have to create the WordPress deployment, enable monitoring, and provide access. Okay, बस ये cluster create हो जाए फिर सब कुछ smoothly होता रहेगा. I don't know why I swear to God, these power cuts and these network issues happen only when I'm taking a live session. वरना वैसे नहीं होते हैं. I don't know why. What's wrong with this? Everything goes wrong when I'm taking a live session. Let's get done with it. Hey guys, I hope you're still there. We'll finish this lab in another 10 minutes. बस एक बार ये cluster create हो जाए ना. We're left with only these things. ये वाला हम कर रहे हैं. मुझे 3 बचेंगे बस. अच्छा cluster create हो चुका है क्या? तो फिर भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर assessment completed आ गया. यहाँ पर it is still creating the cluster. Okay. Okay, great. Great. Let's run the remaining commands. ठीक है. Changing the directory. I'm gonna copy this as it is. ठीक है. Command exception. Number of arguments for CP command. Wrong number of arguments for CP command. Did I do something wrong with this command?
This should have run. I don't know what's wrong. GSU2 city. Acha, let's move on. Let's move on to the next task. Preparing the Kubernetes cluster. We have to copy all the files from here. ठीक है. WordPress server needs to access the MySQL database using the username this and password this we created in task 4. So WordPress also needs to store its working files outside the container. So you create a volume and we have to add the following secrets and volume to the cluster using this YAML file. Make sure you configure the username to this password. ये हो जाना चाहिए हमारा. ठीक है. You also need to provide a key for a service account that was already set up. This service account provides access to database. ठीक है. Key भी करनी है. Right. This is the key code. Right. Why are we not able to execute this code? ठीक है, ये भी हो गया था. I think this is because I was supposed to add a dot here. Yeah. There was supposed to be a dot over here. Yeah. Great. So next task के लिए we have to open the editor. Open this in new window. We have to go to this package wkas. वहाँ पे फिर इस YAML फाइल को सिलेक्ट करना है एंड एज दे स्पेसिफाइड वी हैव टू चेंज द यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है. It's loading up. Okay, this folder. I think, yeah, env YAML file. We have to change the username and password over here. So हमारा username is this. This is also mentioned on the lab. So yeah, यहाँ से copy कर लो या lab से copy कर लो, बात same है. Password is this. You have to save this. Okay, sorry. I think auto save हो रहा है. Save. Yeah. ठीक है. Open terminal and we run these commands. cd change the command, change the directory. Okay, let's run these commands. ठीक है. Database created. यहाँ पे have to remove that key. ठीक है. Key created. हमने वो की का कोड भी रन कर लिया.
अरे यार यहाँ पे भी वो 4 आ गया ना. Wait, wait a second. Move this. ठीक है. uh, credentials created, right? Let's check the progress. You have to create a WordPress deployment now. तो uh, हमने MySQL database provision कर लिया. हमने secrets and volume setup कर लिए. Okay, wait, there's something wrong. की वो तो भाई create हो गई है की. We'll come back to this in a minute. You can create the deployment using this YAML file, but before you create the deployment, you need to edit the YAML file. Replace करो. हमें ये हटा के replace करना है instance connection name. हमारे instance connection name ये था. Yeah, after you create your WordPress deployment, create the WP service YAML file. ठीक है. Once the load balancer is created, you can visit the site and ensure you see WordPress site installer. Visit करके देख सकते हो, right? Let's run the commands. Again, open the editor. We have to go to wp deployment.yaml. यहाँ पे your SQL instance हटा के we have to write this. I'm gonna copy this. Your SQL instance is somewhere over here. Yeah, here it is. I'm gonna paste this over here. Save the file. Go back. Run these two commands, and we will be done. Okay. WordPress created. Go back. Check the progress. हो गया. आई थिंक सेव नहीं हुआ क्या. ऑटो सेव पे है वो तो यार. ठीक है. एनेबल मॉनिटरिंग. अब हमें एक अप टाइम चेक बनाना है. ठीक है. अप टाइम चेक. Navigation menu, Kubernetes engine services and ingress. Copy endpoints address. ठीक है. Navigation menu, Kubernetes engine, services and ingress. Guys, बस हो गया खत्म. Copy this endpoint address. I'm just gonna let's open it in a new tab. ठीक है. अच्छा चलो छोड़ो. Just gonna copy link address and then we have to go to monitoring and then uptime checks. Monitoring. Uptime checks. Create an uptime check. इसका टाइटल है WordPress time. WordPress uptime next. Host name endpoints address without HTTP. Remove this. Just gonna cut this. Host name में ये जाएगा, path में ये जाएगा. Then just click next. Leave everything to default. Test it. कोई बात नहीं. Even if this it's showing that, that's no issue. Just wait for a second for it to create.
इसके बाद we will be done. I think. Yeah, done. Last task. Last. हमें access provide करना है to an additional engineer. So for that we need to copy this username to. हमें इससे editor role देना है for the project. ठीक है. So we're gonna go to IAM. I am an admin. IAM. है add a new role. हमें इस बंदे को बेसिक में एडिटर रोल देना है. सेव and you should be able to see it over here. Great. Checking the progress. Done. 100 by 100 points. Congratulations, we just finished this lab and we finished the whole quest. So when you'll go back, you will see something like this. Great. तुम्हारी क्विक लैब्स प्रोफाइल भी अपडेट हो गई होगी. So you can check it out over here. I also got confused between the Cloud Essentials quest, तो वो भी सेम था. I completed both too, तो कोई बात नहीं. अब we have completed our first quest, our second quest, and our third quest. So congrats to everyone. Although अभी किया नहीं है, but जब करोगे तो I'm just saying it in advance. Okay, I'm gonna stop sharing my screen. Yeah. Uh, I don't know how many of you are still over here because I can't see it on my phone. But for those of you who are still here, yeah, for people who will watch this uh, live session later, um, tomorrow we won't be having a live session. Um, Tomorrow, yeah, there won't be a live session, and कल का schedule you guys need to follow. Next quest की first four labs you have to complete on your own. The lab link and the YouTube reference has been provided to you in that schedule PDF. I'll share that schedule PDF again if you guys want. Complete it on your own. We are halfway done with our first track. Soon we will complete our first track and move on to the second track. So yeah, don't maintain any backlog, just complete it as soon as you can. ठीक है यार. Bye bye. I don't know how many of you are actually still here. पता नहीं है भी या नहीं, मैं अकेली तो नहीं बैठी. बट चलो कोई नहीं. ये सारी लैब परसों से पहले पहले करनी है ना, नेक्स्ट सेशन से पहले पहले. यस, सारी लैब परसों से पहले पहले करनी है. I'll share that word file also. Don't worry तमन्ना. ठीक है guys. Bye. Thanks for sticking up with me so late. See you.